Hi everybody, welcome back to my channel. So this session is I'm going to explain high availability. So I'm going to start one new playlist of checkpoint that is called high availability. Okay, we can call clustering also. So this session is about theory part, and next session we'll try to implement in lab and we'll test it out. Okay. So what is basically clustering? Okay, so clustering में आप बोल सकते हो basically ये redundancy, we can say like high availability, we can say like RAID and fault tolerance. So RAID is basically used on the hard disk level. Okay, so आज के डेट में high availability जो है every level पर है, on switch level, on hardware level, on ISP level, on firewall level. Okay. So अगर आप देखा जाए तो a good network design जो होता है provide the redundancy in devices and network links. Okay, so a redundancy is basically extra hardware or software that can be used as a backup. Okay, so clustering का हम यूज क्यों करते हैं? अगर if two devices are in cluster, if one goes down, another will take the role back. So it will provide redundancy in the production, and that is in case of failure, user is not going to be impacted. Okay, user is not going to impacted whatever accesses through that firewall. So for that purpose, everywhere in every company we are using clustering concept. Okay, every vendor, every technology we are using as HA. Okay, so that we can provide the redundancy in case of failure. Okay, if the main hardware or software fails or link fail or unavailable in case of emergency, it is method for ensuring network availability in case of network device or path failure. So clustering क्या होता है? Used to provide the redundancy in case of one device goes down. So two devices in clustering, one is playing the role as active and traffic is handled by active firewall. If active goes down, traffic will handle on the another box which is in the cluster. So that is called clustering. Okay, it is method of ensuring network availability in case of network device on availability. So I hope you guys understand the definition of clustering. Grouping two devices together called cluster, and one device playing role active at a time. It depends. Some company using active setup also, but 99% company, as per my experience, everyone is using active standby setup. Okay. See, even on hardware level, we have two power supply. This one, this one. Okay, if this one goes faulty, still this firewall has the power supplies, so it will not create outage. So even on hardware level, even on power supply level, we have redundant power supplies in the every devices. In case of ISP also, in every company, we use basically two ISP. Okay, primary, like primary and secondary, we can say. And for example, this at the moment traffic is handled by ISP 1. If this goes down, traffic will handle by ISP 2. So while doing that, user will not impacted, our production traffic will not impacted. हमारे कंपनी का कोई लॉस नहीं होगा. लॉस इन द सेंस लाइक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इवन इन सम कंपनी, इवन मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर मिनट में कितने ट्रैफिक फ्लो होते हैं, कितनी चीजें एक्सेस होते हैं, वी कांट टेल. So we should provide redundancy on each level, even on hardware, even on internet level. That is called ISP. Okay. Even on hard disk level, RAID is redundant array of independent disk. डिस्क में भी हमें दो यूज हो रहे हैं. अगर फॉर एग्जांपल एक डिस्क फॉल्टी हो गया, सो all the things is will be handled by disk one. Disk is just for a storage purpose, right? So in case of this also, we have the redundancy at the moment. That is called RAID, redundant array of independent disk. Okay, दो यूज हो रहे हैं at the moment. In checkpoint we have the this option RAID one. It's related to hard disk redundancy. Okay, so that is called clustering, guys.
So clustering is using everywhere. Even on switch level, if you see, so in switch level also we have ether channel. Two uh, just 1 minute. Two interface is binding together. And if you consider it logically, physically, this is two interface, but logically it is single interface. So here we also use for the redundancy purpose. Okay. High availability basically, I just let me just little bit go through the theory part because this session is just for theory. So high availability basically is a deployment in which two firewall placed in a group. So दो firewall एक group में रहते हैं, that is called high availability. Their configuration is synchronized to prevent a single point of failure on your network. So जो भी चेंज हम एक्टिव पे करते हैं सारे सिंक होते हैं स्टैंड बाई पर. अगर एक्टिव गोज डाउन ट्रैफिक विल हैंडल बाय स्टैंड बाई. देयर शुड बी नो एनी इम्पैक्ट. ओके. Heartbeat connection between firewall peers to ensure failover in event peer goes down. Setting up two firewall in AHA pair provide redundancy and ensure business continuity. Firewalls in AHA pair use AHA link to synchronize data and maintain state information. So everything going to sync from active to standby, so that if active goes down, a standby will take the role back. So that is called high availability. What is the HA prerequisite? So if you are putting two devices in the HA, so basically that device should be in same model, same version, same type of interface. Okay, license unique to each firewall, cannot be set between each same set required. So license of course unique होते हैं. Each firewall has unique license. एक लाइसेंस आप दो फार्मल यूज नहीं कर सकते हो. व्हेन यूजिंग क्लस्टर एक्सेल मेक श्योर टू सिंक्राइज द क्लॉक्स ऑफ ऑल क्लस्टर मेंबर्स. अगर दो फायरवॉल एचए में है तो सेम वर्जन, सेम मॉडल, सेम इंटरफेस टाइप, लाइसेंस यूनिक होना चाहिए और क्लॉक दोनों का मतलब सेम होना चाहिए. टाइमिंग. ओके. यू कैन सिंक्रोनाइज द क्लॉक्स मैनुअली और यूजिंग प्रोटोकॉल सच एज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल. सो इन एवरी कंपनी यूज एनटीपी, राइट? Hardware for all cluster member must be exactly the same CPU, memory, and motherboard. Like model same, version same, CPU same, memory same, motherboard same. Okay. For example, हम दो फायरवॉल को एसी में डाल रहे हैं. दोनों एच क्वाड फायरवॉल. यहाँ पर 2 कोर सीपीयू, यहाँ पर 3 कोर सीपीयू. इट विल नेवर कम इन एच. वहां पर एसी बनेगा ही नहीं. सो वी शुड कीप सिमिलर. अगर 2 कोर सीपीयू यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 कोर सीपीयू होना चाहिए. देन वी कैन पुट इन द एच. सो दैट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी. ओके. Failover, I'm not going to do much because failover like of course when firewall and peer takes over the task of securing traffic. मतलब failover कब होता है? अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर failover का एक definition दिया है. So let's little bit go through the theory so that in next session we'll only focus on the our live part. Okay, live. सो फेल इज ए, अगर आप बात करें यहाँ पर तो फेल जो है, फेल इज ए रिडंडेंसी ऑपरेशन दैट ऑटोमेटिकली ऑकर्स ऑफ मेंबर इन नॉट फंक्शन. सो फेल के यहाँ पर डिफिनेशन बताया कि अगर एक डिवाइस है वो फंक्शन एक्टिव है, दूसरा स्टैंड बाई इन क्लस्टर. इफ अगर एक्टिव इज नॉट फंक्शनिंग इट इज गोइंग टू फेल ओवर टू द अनदर बॉक्स. दैट इज द डिफिनेशन ऑफ फेल ओवर. ओके. So we will not spend much time here because it's simple and short. So we can just understand like this. How both how both devices know like which one is active by standby and where is the fault. So there is protocol like cluster control protocol. It is used to sync the information to each other. So with the help of cluster control protocol, this device will know, okay, this is goes down, so I need to take as a rollback as a active. I need to perform as a active. So with the help of CCP, cluster control protocol, and its work on UDP port 8116. UDP. It is very important protocol. It is used in checkpoint clustering, cluster control protocol. Okay. So I just mentioned like cluster control protocol क्या होता है कि to tell each member that other members are alive and functioning. The cluster
एक्सेल क्लस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल मेंटेन्स हार्ट बीट बिटवीन क्लस्टर मेंबर्स। सो ये हार्ट बीट मेंटेन करता है बिटवीन टू क्लस्टर मेंबर्स। After a predefined time, no message is received from member. It is assumed that the cluster member is down and failover occurs. So with the help of CCP, everything going to be synced to each other, monitored to each other. Heartbeat synchronization, other stuff is monitored with the help of CCP. And अगर दूसरे peer से response नहीं आता है तो peer समझ जाता है other peer कि my other peer is down and I need to take as a role active. Okay? and उस समय failure हो जाता है। So हम लाइव भी देखेंगे, लाइव में इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद में हम ट्रबल शूटिंग भी देखेंगे कि एचए का ट्रबल शूटिंग हम डेप्थ में कैसे कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू शो द डिबग लेवल ऑल्सो, डिबग लेवल ऑफ ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू हाई अवेलेबिलिटी इन चेक पॉइंट। ओके, सो जब क्लस्टर हम कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन आवर फायरवॉल, सो देयर आर टू ऑप्शन। ओके, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी गेटवे रिकवर ऑप्शन दो तरह से होता है, एक होता है मेंटेन करेंट एक्टिव सिक्योरिटी गेटवे। इसके केस में क्या है कि दूसरा होता है स्विच टू हायर प्रायोरिटी सिक्योरिटी गेटवे। तो पहले इसको समझते हैं। मान लो ये दो दो फायरवॉल है, ये एक्टिव है, ए स्टैंड बाई है। तो अगर ये डाउन गया, दिस विल टेक द रोल एज ए एक्टिव, राइट। अगर ये वापस वापस अप आया, सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक द रोल बैक ऑटोमेटिकली, यही उस समय एक्टिव रहेगा। इफ वांट टू फेल ओवर अगेन, वी नीड टू डू मैन्युअली, वी नीड टू वी नीड टू मैन्युअली मेक दिस बॉक्स एज एक्टिव। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ मेंटेन करेंट एक्टिव सिक्योरिटी गेटवे। सेकंड वन इज स्विच टू हायर प्रायोरिटी सिक्योरिटी गेटवे। मान लो अगर ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाई है, ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाई है, इसका प्रायोरिटी हमने हाई करके रखा है, इसका लो है। अगर ये डाउन गया तो ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर ये फिर वापस से अप आएगा तो ऑटोमेटिकली टेक द रोल बैक एज ए एक्टिव। ओके, वी डोंट नीड टू डू द मैन्युअली, बट 99% in the setup in the company, as per my experience, everyone using maintain current active security gateway, so that मतलब दो बार तीन बार फेल ओवर ना हो। सो फॉर टू अवॉइड सच थिंग्स, वी यूज मेंटेन करेक्ट एक्टिव सेफ्टी गेटवे, सो दैट इफ रिक्वायर्ड वी कैन डू मैनुअल फेल ओवर। ओके, I will share this PDF guys for you. Okay, if you have any problem, any doubts, we can comments and I will try to respond whenever I will free. Okay, and let's see a little bit out ClusterXL type also. Then we'll close this session because I want to cover all the theory in this session only. Okay, so ClusterXL, in ClusterXL basically two types: high availability and load sharing. In high availability, there are two types: new mode and legacy. Legacy is no more. It is now replaced as a VRRP. So VRRP is basically third-party clustering protocol. And the people who is working on the switching and routing background, they mostly know like VRRP. VRRP, HSRP, GLVP. So we'll not try to cover VRRP more because it is not in mostly used in the checkpoint. Okay, this is the third-party clustering protocol. New mode is basically we can say ClusterXL. So ClusterXL हमने already पढ़ लिया, because if we combining two firewall in a group, we can say that is a ClusterXL. और हम क्लस्टर में टोटल 8 फायरवॉल डाल सकते हैं टू मेक एज क्लस्टर। ओके, इन लोड शेयरिंग देयर आर टू टाइप, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। सो बेसिकली इट काइंड्स ऑफ एक्टिव सेटअप, एक्टिव। इसको हम देखते हैं आगे थोड़ा सा डेफिनेशन। सो क्लस्टर एक्सेल में टू डिवाइसेज रहेंगे क्लस्टर में, वन एक्टिव एंड वन स्टैंड बाई। वहां पर क्या होगा कि वर्चुअल आईपी का यूज होता है। ओके, एंड वर्चुअल आईपी के साथ जो मैक होता है, वो जो भी हमारे एक्टिव फायरवॉल रहता है उसका मैक एज ए यूज होता है। ओके, एंड अगर ये डाउन गया तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो इसका मैक एज ए यूज होगा। वाई यूज वर्चुअल आईपी? आप मान लो इस पीसी के लिए आपने ये गेटवे डाल के रखा, इस पीसी के लिए आपने ये गेटवे डाल कर रखा, इस इंटरफेस का आईपी, इसके लिए भी इस इंटरफेस का आईपी। इट दिस इंटरफेस गोज डाउन, आपको मैन्युअली फेलो है ना गेटवे चेंज करना पड़ेगा सारे डिवाइसेज में जाकर इंटरनल पीसी पे। If you consider there are 100 and 200 even 500 पीसी in your company, and सबके लिए आपने गेटवे इस इंटरफेस का आईपी देकर रखा है, अगर इस इंटरफेस दिस इंटरफेस गोज डाउन, आपको सारे इंटरनल पीसी पे जाकर और इंटरफेस का मतलब गेटवे चेंज करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड डिजाइन। ओके, राइट। सो इसीलिए हम यूज करते हैं वर्चुअल आईपी कंसेप्ट। ओके, सो सारे पीसी के लिए वर्चुअल आईपी हमारा क्या रहेगा, गेटवे रहेगा।
और वर्चुअल आईपी का मैक जो रहेगा एक्टिव फायरवॉल का मैक के साथ काम करेगा, ऐसा आप इन शॉर्ट में आपको बता दो। अगर एक्टिव फायरवॉल गोज डाउन, so with the help of GRP, the basically good protocol we can say features used for the clustering concept. So with the help of GR, इनको पता चल जाता है कि दिस फायरवॉल अगर जैसे कि दिस फायरवॉल अगर गोज डाउन, ओके, सो आप जो ये फायरवॉल एक्टिव बन जाएगा तो इसका मैक इसके साथ मैप हो जाएगा वर्चुअल आईपी के साथ, ओके। एंड नाउ दिस ट्रैफिक इज हैंडल्ड बाय दिस फायरवॉल, सो दिस इज हाउ इट इज डिजाइन, ओके। So we can say like GR. It is very, very, we can very, very important. It's play vital role in the clustering concept. Okay. थोड़ा सा इसके बारे में आप गूगल भी करो, एंड इट्स वेरी गुड फीचर्स। ओके, legacy mode is now replaced at a VRRP. Okay, this is about ClusterXL. One will be active and another is work as standby. थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लो इस इंटरफेस का आईपी है 10.10.10.10, इसका आईपी है 10.10.10.20। तो इसी रेंज का हम आईपी देते हैं वर्चुअल 10.10.10.10, फॉर एग्जांपल 30। ओके, दिस विल वर्चुअल आईपी, और ये एक्टिव है तो इस इंटरफेस का जो मैक रहेगा इसके साथ आप बोलो कि एक्टिव फायरवॉल मैक इज यूज इन दिस केस फॉर दिस वर्चुअल आईपी। वर्चुअल मैक भी आई नेवर ट्राइड इट, बट ये जो वर्चुअल आईपी इसके साथ एक्टिव फायरवॉल का मैक जो है काम करता है। So this traffic is sent by to this, this for this PC gateway is our virtual IP and it's handled by this firewall. Okay? तो अगर मैक का कंसेप्ट अगर लेयर 2 का बात करोगे तो ये इस इंटरफेस का मैक काम करेगा। अगर आप रिजोल्व करोगे आईपी टू मैक, अगर ऐसा कंसेप्ट बताओ तो, ओके। अगर ये फायरवॉल गोज डाउन तो इस इंटरफेस का जो मैक रहेगा इसके साथ आप बोलो कि आईपी के साथ ही वर्क करेगा, ओके। मतलब मैक लेवल, लेयर 2 लेवल, इस इंटरफेस का जो मैक रहेगा वो वर्क करेगा। एंड एवरीथिंग दिस प्रोसेस हैपन इन बैक एंड, किसी को पता नहीं चलता है। एंड आई ऑलरेडी मेंशन जीआरपी इज प्लेइंग वाइटल रोल इन दिस कंसेप्ट, ओके। ओके, नाउ मूव टू द लोड शेयरिंग। सो लोड शेयरिंग में हमारे पास दो टाइप होते हैं, एक होते हैं मल्टीकास्ट एंड एक होता है यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि 50% 50% ट्रैफिक, ओके। सो ये जो हमारा है ये जो लिंक होता है जिसके ऊपर हमारा जो प्रोटोकॉल यूज करता है क्लस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट्स वर्क ऑन द यूटीपी पोर्ट 8116। इसी इसका काम है सिंक करने का, हार्ट बीट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन, इवन सेशन इंफॉर्मेशन, स्टेट इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू सिंक विद हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल क्लस्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सो इसमें क्या होता है कि विद हेल्प ऑफ सीसीपी, नो, both are going to decide like कौन ट्रैफिक किसको हैंडल करना है। सो दैट इज द कॉल मल्टीकास्टिंग। 50% लोड इज हैंडल बाई बोथ द फायरवॉल। सो इट्स काइंड्स ऑफ एक्टिव एक्टिव सेटअप वी कैन से, ये भी एक्टिव है ये भी एक्टिव है। 50% इसके साथ ट्रैफिक हो रहा है, 50% ये ट्रैफिक हैंडल कर रहा है। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट रहेगा वीप का। सारे इंटरनल पीसी के लिए वीप हमारा वीप वर्चुअल आईपी गेटवे रहेगा, नॉट द इंटरफेस आईपी, ओके। जो फायरवॉल एक्टिव रहेगा उसका मैक वर्क करेगा ऑन लेयर टू परस्पेक्टिव। ये डाउन जाएगा तो इस इंटरफेस का मैक लर करने का वर्क करेगा फॉर लेयर टू परस्पेक्टिव, ओके। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। लोड शेयरिंग के टू टाइप, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में 50% ट्रैफिक हैंडल होगा बाय बोथ द फायरवॉल, एक्टिव एक्टिव, बोथ विल बी एक्टिव एक्टिव, ओके। यूनिकास्ट में क्या होता है कि वन फायरवॉल वर्क एज ए pivot एंड अनदर विच लाइक एक जो pivot है उसका वो 30% हैंडल कर ट्रैफिक, अदर विल बी हैंडल 70%। सेम परसेंट वर्चुअल आईपी फॉर ऑल द इंटरनल पीसी, दिस विल बी द गेटवे। हम इसको प्रैक्टिकल में भी देखेंगे, लाइव देखेंगे, सो इट विल बी गिव मोर कॉन्फिडेंस गाइस, ओके। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम लाइव भी देखेंगे। एंड आई विल डू, आई विल क्रिएट, आई विल अपलोड वन सेशन फॉर ट्रबल शूटिंग, डेप्थ ट्रबल शूटिंग रिलेटेड टू एचए इन चेक पॉइंट।
सो ये फायरवॉल डिसाइड करेगा कि हमें किस ट्रैफिक को मुझे हैंडल करना है, किस ट्रैफिक को इसको हैंडल करना है। सो दैट इज कॉल्ड पिवोट। तो इन केस ऑफ यूनिकास्ट वन विल बी प्ले एज ए पिवोट एंड अनदर। आप बोल सकते हो कि ये मैंने ऐसे इन शॉर्ट में समझो कि ये मैनेजर का रोल करेगा। इसके ऊपर राइट से कि कौन सा ट्रैफिक हमें हैंडल करना है, कौन मुझे पीयर को देना है। ओके, यहाँ पर देखो पूरा लिखा हुआ है। लेट मी इरेज इट एंड विल ट्राई टू रीड थ्योरी। सी, ट्रैफिक इज सेंड टू ओनली वन नोड इन केस ऑफ यूनिकास्ट। किसको भेजा जाएगा? दिस इज कॉल्ड अ पिवट नोड। जो पिवट है उसको मैनेजर बोलो आप, उसको भेजा जाएगा। द पिवट नोड देन आइदर प्रोसेस द पैकेट और पास इट टू द node for processing. When a failover event occurs in a non-pivot member, it handled connection are redistributed between active cluster members, providing the same high availability capability of new high availability and load sharing multicast. When the pivot member encounters a problem, a regular failover event occurs, and in addition, another member assumes the role of the new pivot. The pivot member is always the um, active member with the highest priority. This means that when a former pivot recuperates, it will retain its previous role. मतलब ऐसे समझो इसको थोड़ा सा, ऐसे समझते हैं। ये पिवोट है, ये मैनेजर है। सेम प्रोसेस रहेगा। ट्रैफिक यहाँ आया तो इट इज गोइंग टू डिसाइड कि हमें कौन ट्रैफिक मुझे हैंडल करना है, कौन सा पीयर को देना है। अगर मान लो ये गोज डाउन गया, अगर ये तुम्हारा पीयर डाउन चला गया, तो 30% हैंडल नहीं करेगा। इट इज गोइंग टू हैंडल 100% ट्रैफिक। ओके, अगेन इट विल, अगर इट विल कम अप, ओके, अगेन अगर ये वापस आता है, आप आता है, सो इट इज गोइंग टू अगेन एक्ट एज ए पीवोट। उस लाइन का मतलब ये था, ऊपर वाला लाइन। ओके, सो जब ये पूरा ये डाउन है पीयर, तो ये 100% हैंडल करेगा। बट अगर बोथ पीयर में है एंड हमने लोड शेयरिंग यूज किया है क्लस्टरिंग के लिए, सो ओनली 30% ट्रैफिक इज हैंडल बाय पीवोट एंड रेस्ट इज हैंडल बाय पीयर्स। ओके, cluster control protocol I have already explained. The cluster control protocol is the glue that links together the members in the security cluster. CCP runs on the UDP port 8116, and it allows cluster member to report their own states and learn about the states of the other member by sending keep alive packets. तो keep alive के द्वारा it generally understand other member state like वो active है या down है. Okay, the checkpoint CCP is used by all cluster XL mode. ओके, सो क्लस्टर एक्सेल का जितना भी मोड है, न्यू नो लाइक न्यू मोड, लेगेसी, लाइक इन केस ऑफ वीआरआरपी, इन केस ऑफ क्लस्टर एक्सेल में यूज होता है। देयर इज नो नीड टू ऐड एन एक्सप्लिसिट रूल टू द सिक्योरिटी पॉलिसी बेस्ड दैट एक्सेप्ट सीसीपी। मतलब आपको कोई भी एक्सप्लिसिटली रूल ऐड करने की जरूरत नहीं है टू अलाउ द सीसीपी प्रोटोकॉल। बट इन केस ऑफ वीआरआरपी आपको एडिशनली सिक्योरिटी पॉलिसी ऐड करना पड़ता है। ओके, वीआरआरपी हम नहीं कवर करेंगे बिकॉज थर्ड पार्टी क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल नॉट मच इन यूज। ओके, वो ज्यादातर स्विचिंग एंड राउटिंग लेवल पे यूज होता है, अगर वहां पर आप जैसे कि रिडंडेंसी का यूज करते हो तो। बट मोस्टली वी यूज क्लस्टर एक्सेल। ओके, एंड इन क्लस्टर एक्सेल में आप लाइक हाई अवेलेबिलिटी में एक अदर स्टेप हम यूज करते हैं जिसमें मैंने अभी एक्सप्लेन किया, लाइक लोड शेयरिंग, लाइक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड क्लस्टर एक्सेल। ओके, मतलब ये वाला चीज। हाई अवेलेबिलिटी में ज्यादातर न्यू मॉड्यूल जो रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर एक्सेल, एंड लोड शेयरिंग में यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट में मल्टीकास्ट जनरली यूज होते हैं। तो क्लस्टर एक्सेल का टू टाइप, हाई अवेलेबिलिटी, लोड शेयरिंग। हाई अवेलेबिलिटी में न्यू मोड मतलब क्लस्टर एक्सेल, लेगेसी मतलब वीआरआरपी, लोड शेयरिंग में यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। तो मल्टीकास्ट कहीं के यूज होते हैं, नॉट यूनिकास्ट। ओके, जहां पर एक्टिव एक्टिव का सेटअप। एंड वीआरआरपी में थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं और देन विल क्लोज दिस सेशन। वीआरआरपी नॉट मच इन यूज। ओके, सो वीआरआरपी में क्या होता है कि यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है मास्टर एंड स्लैब का। ओके, सो यहाँ पर आपको वो भी कन्फिगर करना पड़ता है। वर्चुअल राउटर कैन हैव वन मोर वर्चुअल आईपी एड्रेस। यहाँ पर वर्चुअल राउटर आइडेंटिफायर, ओके, वीआर आईडी आपको कन्फिगर करना पड़ता है। जिसका हाई रहेगा वो मास्टर रहेगा एंड जिसका कम रहेगा वो स्लैब रहेगा। तो ऐसा कंसेप्ट रहता है वीआरआरपी का। सो इस केस में क्या है कि ट्रैफिक वर्चुअल आईपी को आएगा एंड देन इट विल सेंड टू द मास्टर, एंड अगर मास्टर गोज डाउन सो इट विल टेक द रोल बैक बाय बैकअप। ओके, अब मास्टर स्लैब बोलो, तो अगर मास्टर से ट्रैफिक हैंडल कर रहा है
इफ दिस गोज डाउन इट विल टेक रोल बैक, मतलब ये एक्टिव हो जाएगा, ये फिर ये आप आएगा तो फिर अगेन इट विल टेक द रोल बैक। ओके, इट डिपेंड्स ऑन क्या आपने की सिक्योरिटी गेटवे ऑप्शन में क्या सिलेक्ट किया, मेंटेन वाला या स्विच टू हायर हाई प्रायोरिटी सिलेक्ट किया। ओके, the backup is assign a heap upon failover when it becomes the master. Nodes can have alternate path with the static default routes in the event of a failure. थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आई विल ट्राई टू शो यू द लैब आल्सो, बट इसका बहुत कम यूज है। ओके, a static default route minimize the configuration and processing overhead on host computers. Monitor circuit VRRP prevents connection issue occurs by asymmetric routes when only interface on a master fails, not the master itself. This problem occurs in environment where a gateway is a member of two or more virtual routers, typically one with internal interface and other with external interface. Okay, so this is about theory. आपको ये समझ नहीं आया होगा VRRP, that is fine. आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है because it's not much in the production. This is the third party clustering protocol. Okay, but इतना समझो कि सेम यूजर कंसेप्ट है, इसके केस में भी वर्चुअल आईपी यूज करते हैं ऑल फॉर ऑल द इंटरनल पीसी और वीपी इज द गेटवे। ओके, इट हैंडल बाई मास्टर, मास्टर डाउन जाता है इट विल हैंडल बाई अनदर बॉक्स जो कि उस समय एक्टिव हो जाएगा। ओके, इट्स वर्क ऑन द सम राउटर आईडी कंसेप्ट, वी कैन से आइडेंटिफायर कंसेप्ट, जिसका हाई रहेगा इट विल वर्क एज ए मास्टर। ओके, so this is about the theory of the cluster XL. We can say like high availability in checkpoint. Next session I'm going to upload video related to the live example. I will try to set up the lab and I will show you guys. And then in next session, after the lab, I will try to upload one session for troubleshooting with debugs levels of like commands and all. So मैं debug level का जो command होते हैं वो भी I will try to show. एटलीस्ट if अगर हम देख नहीं सकते तो मैं शो तो जरूर करूंगा एंड सम ट्रबल शूटिंग कमांड्स की ये चेक फेलओवर होते हैं तो उसके इसमें कौन कौन से कमांड वेरी यूजफुल होते हैं इन चिप पार्ट। ओके, thank you very much everybody. If you like this session, if you like my efforts, please share, subscribe my channel as much as possible. Thank you very much.